हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सौरव सर क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं आईएसआई एम मैथ 2024 सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है, लेट R be a commutative ring with unity. Suppose R has exactly two non-zero prime ideals. One is P1 and another one is P2. Assume that P1 intersection P2 equals to set of 0. तो यहाँ पे तीन प्रूफ दिया गया है। फर्स्ट प्रूफ में बोला गया है P1 and P2 are maximum ideals, and next proof में बोला गया है R is a product of two fields, and third one is find all the ideals of the ring R. तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को। So given commutative given a commutative ring R with unity which has exactly two prime ideals P1 and P2 such that uh, P1 intersection P2 equals to 0. So we will address this question into three parts. Okay, so in part A, prove P1 and P2 maximum ideals. So how can I prove? So to show the P1 and P2 are maximal, you will use the properties of prime ideals and the structure are given in below. So point number one is, since P1 and P2 are prime ideals and P1 intersection P2 equals to 0, so we can consider the quotient rings R by P1 and R by P2. That means, and the next part is, since P1 and P2 are prime ideals, so the quotient rings R by P1, क्वेश्चन रिंग्स क्या क्या है? क्वेश्चन रिंग्स को हम चलिए क्यू आर लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट हो गया। सो क्यू आर मीन्स R by P1 and R by P2 are integral domain. And question number 3 is, now consider the prime ideal P1 we claim that P1 is maximum. So here some points are to be stated. Suppose P1 is not maximal, then there exists an ideal J, there exists
an ideal J such that P1 subset of J subset of R and J not equals to R. And the next point is, since P1 is prime and P1 subset of J, so J must be also a prime, all J's must also, sorry, it's a grammatical problem, must also be a prime ideal. And the next point is, since R has exactly two non-zero prime ideals, first one is P1 and P2, so the only possibilities for J are P1 or P2. So the only possibilities for J are P1 or P2. And the next point is, if J equals to P2, then P1 set of P2. So, however, since P1 intersection P2 equals to 0 and P1 and P2 must be distinct and not contained in each other and not contained in each other. Okay, and the last and final point is, therefore J must be P1, J must be P1, contradicting the assumption, contradicting the assumption J not equals to P1. Okay, and so the fourth and final point is, thus P1 is maximal. Similarly, we can show, similarly, we can show P2 also maximal. Okay, and in this next part, we can prove the part number B question. So
यहाँ पर प्रूफ में क्या बोला गया है, आर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स। तो इस प्रूफ के लिए हम क्या क्या चाहिए, पार्ट बी। पार्ट बी को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा। टू शो दैट आर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड, we will use to show this proof, we will use the Chinese remainder theorem, abbreviated as CRT, and the structure of maximal ideals, and the structure of maximal ideals. Proof since P1 and P2 are maximal ideals, so R by P1 and R by P2 are fields. And the next part is the condition P1 intersection P2 nullity 0 allows us to use the CRT. And the third point is, by the CRT, since P1 and P2 are coaxial, since P1 and P2 are coaxial, that means dot P1 plus P2 equals to R. So we have R is a congruence model. R is a congruence relation with R by P1 cross R by P2. And the fourth point is, since R by P1 and R by P2 are fields, ये क्या है, ये दोनों fields है, तो हम बोल ही सकते हैं R is isomorphic to a product of two fields. Okay, एंड अब हम लोग करेंगे पार्ट सी वाला प्रूफ। इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल द, इसमें प्रूफ बोल रहे हैं फाइंड ऑल द आइडियल्स ऑफ द रिंग आर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे रिंग आर का आइडियल्स, to find the ideals to find the ideals of R, we can use the fact that R is isomorphic
to a product of two fields R by P1 and R by P2. So we can prove that. So we can start this proof. Let R has a congruence relation of F1 into F2. ये F1 F2 क्या है? ये दोनों ही फील्ड है. ये दोनों ही क्या है? फील्ड्स है. And the ideals in R, the ideal in R, that means the ideals in R that means the ideals means R का मतलब क्या है? F1 cross F2 correspond to the subset of the form I1 cross I2, where I1 is an ideal of F1. I1 क्या है? आइडियल F1 का आइडियल है and I2 is a ideal of F2. Okay, and the third point is, since F1 and F2 are fields, so their only ideals are their only यहाँ पे एक ही आइडियल्स रहेगा जीरो एक है जीरो and another one is the fields themselves F1 and F2 and the fields themselves F1 F1 sorry F1 and F2. So the fourth one is, therefore possible ideals in F1 cross F2 are possible ideals in F1 cross F2 are 0 0 F1 0 0 comma F2 F1 comma F2, and the fifth one is translating this back to R, translating this back to R, we get the ideals क्या क्या आइडियल्स है जीरो कॉमा ऐसे लिखता हूँ एक है P1 and another is P2 and the last one is R. So the
does the ring R has exactly four ideals. Four ideals. That means zero, nullity zero, P R. ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जुड़े रहिए सौरभ सर क्लासेस के साथ। हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, आईएसआई के लिए हम ही लोग बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो हम लोग एग्जैक्ट पूरा का पूरा डिटेल्ड राइट सॉल्यूशन देते हैं आपको, स्टूडेंट बच्चे लोगों के लिए। और हेल्प के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं और कुछ हेल्प लगेगा तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए। सौरभ सर हिमसेल्फ रिप्लाई यू। ओके, 93679307 सौरभ सर आपको डायरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चे लोग।